one of the events this morning and I came out thinking, wow, it is indeed, it has been a transformative event where students have grown so much, I believe, in their thinking, how they engage with ideas and what perspectives mean. This summit has really been a unique milestone in the life of our school, and we look forward to similar events in the future. Today we are at the Nehru World School for the very first edition of Ideas in Action Summit, and I'm sure it's going to continue for decades, for years to come. And I am very happy about the fact that this conference is taking some good shape. बहुत सारी कमिटीज़ में, इनफैक्ट सारी कमिटीज़ में क्राइसिस इंट्रोड्यूस हुए, सारी कमिटीज़ में क्राइसिस बहुत अच्छे से हुए. मुझे एक चीज़ देख के पर्टिकुलरली बहुत अच्छी लगी कि बच्चे ये बोल रहे हैं, द पार्टिसिपेंट्स आर सेइंग दैट दे आर एबल टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, और उस जोन से भी जहाँ वो आज तक लिमिटेड रह गए. तो जो हमारा मोटिव था वही हम पूरा हुआ है. उन्हीं को बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा जो मैंने बताया कि डिफरेंट कमिटीज़ में फॉर एग्जांपल कि हिस्टोरिक कमेटी में स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा, जो कि बहुत मुश्किल कमेटी आज के दौर में हम कह सकते हैं. तो 1975 में बच्चे गए और वहाँ का रिसर्च मटीरियल उन्होंने इकट्ठा किया, उसमें पढ़ा और फिर आके 2 दिन यहाँ पर डिबेट किया. तो इम्पोर्टेंट ये है कि रिसर्च तो हम सब करते हैं, और बट इनका एज ग्रुप देखते हुए तो आप देखेंगे कि जब स्पीच या कुछ वीडियोज अगर जब आएंगी तो बच्चे कोट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, बच्चे कोट कर रहे हैं लॉ को, और बहुत सारे एक्ट्स को, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लीगल हैं और जो बच्चे उनसे परिचित नहीं है इस एज में, लेकिन फिर भी वो बच्चे उस पर बात कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत देश के लिए बहुत अच्छी बात है. सेम उसी तरीके से अदर कमिटीज में, चाहे वो इंटरनेशनल प्रेस करना हो, यूएनजी करना हो, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल एस्पेक्ट को बच्चे इतने अच्छे से डिस्कस कर पा रहे हैं. एंड लोकसभा ऑल्सो, जहाँ पर विभिन्न तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा कर रहे हैं, और यही अलग अलग कमिटी आईपी, मार्बल, और बस मैं यही चाहूंगा कि हमेशा ये इवेंट इस तरीके से चलता रहे, और ये डिबेट की जो लेवल है, सब्सटेंस जो हम कहते हैं, जो सब्सटेंटिव डिबेट और सब्सटेंटिव रिसर्च हमेशा बनी रहे. और बस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. Please recognize the reasons of this Sanita, and Mr. Narendra, you will be hospitality for the students. Hi, I am Avni. I am Secretary General of Ideas and Action Summit 1.0. I would like to congratulate all the participants, all the winners who came to this conference and participated and debated throughout the 2 days. I would also like to thank all the organizing committee members, the committee heads, and everybody from Rajdhani Yuva Sansad. We thank you for coming to the event, and thank you. Hi everyone, I am Tanisha and I am the Deputy Secretary General for Ideas in Action Summit 1.0. Firstly, I would like to congratulate all the winners and all the participants for coming today and participating. And thank to all the organizing committee members for being with us and cooperating at all times. And a big congratulations and thanks to the Secretariat team for making this event a big success. And we are looking forward to have more editions of Ideas in Action Summit together. Thank you. Hello everybody, I am Parunarel. I am the Secretary General of Hospitality for Ideas in Action Summit 1.0, and we would like to congratulate each and every participant who participated, the organizing committee members, the school authorities, and last but not the least, the co-founders of Rajdhani Yuva Sansad and the whole core team of Rajdhani Yuva Sansad for making this event successful. Thank you so much.